Thank you for coming you. and Thank allowing you. me to meet with you. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आशीषित हूँ, क्योंकि मैं आपका बीच में आके आपको मिलने के लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. थैंक यू जी, Thank you, Thank Jesus. you, Lord. थैंक यू। Thank you, Lord. Praise the प्रभु Lord. को महिमा Thank करेंगे, you, Lord. प्रभु को Praise the धन्य Lord. कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Thank you, Lord. Shalander, Charlie Anna, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड मोजेस when, अन्ना। Praise the Lord, Shalander, Moses. Praise the when Lord. we get through Pastor preaching praise the today, Lord. हाँ, हम लोग आज वचन को जाने से पहले हम लोग एक बात को हम याद करेंगे। Shalander, I want you to sing Amazing Grace at the end of the service. शैलेंद्र भैया, आपने अमेजिंग ग्रेस गाना को और ये मीटिंग खत्म होने के बाद अंत में आप गाने के लिए सार चाहता है। अमेजिंग ग्रेस Oh, हाउ thank स्वीट द you. सॉन्ग। आप मीटिंग खत्म होने के बाद लास्ट में गाना गाइए। हाँ सर, Okay. ओके सर। So, We are going to cover a lot of material today. और हम लोग oh, आज वचन को और ध्यान करेंगे। इस वचन में हम लोग बहुत वचन को, हम लोग बहुत बातों को हम लोग देखने के लिए चाहता है। And this is about 7 or 8 chapters. और आज हम लोग और 7 और 8 अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। So I ask you to get pen and pencil so you can write down things that I'm only going to mention. और कृपया कृपया कृपा करके आप सब लोग और पेपर और पेन को लेके आइए। और मैंने जो वचन बता था आप लोग लिखे और मीटिंग खत्म होने के बाद आप पढ़ने के लिए आपको अच्छा रहेगा। All of this is so important to the Hebrew and the Christian faith. और ये बहुत महमूल्य है और क्राइस्तव विश्वासियों को और हेब्रियों को और यूद लोगों को ये बहुत महमूल्य बात है। So get your pen and pencil ready, or pencil and paper. कृपया करके आपका पेन और पेंसिल और पेपर को तैयार रख दीजिए और नोट कर दीजिए। We're going to go to Exodus. और हम लोग निर्गमन में जाएंगे। And 24 we covered na last Friday. Nirgama kaana na. అవునన్నా, एक्सोडस निर्गमन में और हम लोग 24 का पद में हम लोग जाएंगे। 24। 24. हाँ सर। As you were that were here Friday, remember we talked about this. और हम लोग पिछले शुक्रवार को हम लोग इसके बारे में हम लोग ध्यान किया है। आप याद हो नहीं याद हो, हम लोग 2-3 हफ्ते पहले हम लोग इसके बारे में हमने ध्यान किया है। God called Moses and 73 other people to the foot of the mountain. और परमेश्वर ने मूसा को और उसके साथ और 70 और बड़ा लोगों को और साथ में मिला के और एक पहाड़ पर आने के लिए बुलाया था। And in verses 9 through 11, read that of 24. और निर्गमन का 24 का और 9 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। रमेश कुमार भैया आप पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए। मनोरमा दीदी आप पढ़ लीजिए। 9 से कितना सर? 9 से 12 तक। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब आमीन मूसा यहो आमीन सर। आमीन। We see a couple things in here that the 74 men saw God. और इधर हम वचन में लिखा है, और मूसा के साथ और 70 और लोग गया था, वो लोग सारे परमेश्वर को देखा है। And when they saw God, they saw him on a sapphire pavement that was beautiful. और वो लोग परमेश्वर को और देखते समय और बहुत अच्छा आग उनका सामने आ गया, एक आग का रूप में परमेश्वर उनको दिखाया था। वो बहुत सुंदर का और आग है। And then in verse 11 it says, but God did not raise his hand against the leaders. और परमेश्वर ने और उनका हाथ और वो जो लोग आया है वो लोगों का ऊपर नहीं रखा है। Why didn't he raise his hand? Because these were the leaders of 1,000,000 Hebrews. और क्यों वो लीड और ये बड़ा लोगों का ऊपर और अधिकारी लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ थाम कर उनको आशीष नहीं किया कि वो लोग बहुत लाखों लाखों का ऊपर लोगों का ऊपर वो लोग अधिकारी कर रहा है। God knew the rebellions that were coming one after the other against Moses and God. परमेश्वर को सब कुछ जानता है, और जो जैसा वो लोग आया है और मूसा के खिलाफ जैसा वो लोग लड़ रहा है, और परमेश्वर के खिलाफ वो लोग और 40 सालों में कैसे लड़ रहा है परमेश्वर को मालूम है। And then the last part of 11 gets my hair standing up. और ये अध्याय में अंत का भाग में ये मैं वचन पढ़ेगा तो मुझे बहुत डर लगा है। Because these 74 men sat and ate and drank in God's presence. और वो उधर वचन में लिखा है, और मूसा के साथ आया था, वो बड़ा लोग है, अधिकारी लोग है, वो लोग उधर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के खाना खा के पी के वो लोग मस्ती कर रहा था। Now, just as my hair stands up in a scripture that is 3,000 years old. और ये वचन लिख के और 3000 साल हो गया है, और फिर भी ये वचन को हम पढ़ते समय ये वचन को क्यों हमारे लिए वचन परमेश्वर ने लिखा है, हम सोचेंगे। Each of our hair should stand up on our neck because we have that God that lives in our heart. और वही परमेश्वर वो जैसा 3000 साल पहले मूसा के साथ और इस्राएल लोगों के साथ रहा है, वही परमेश्वर अभी हमारे साथ रह गया। We have him every day. और ये परमेश्वर को हम हर दिन हम लोग महसूस कर रहा है, हम लोग अनुभव कर रहा है। When we move on, the Lord tells Moses to come up the mountain. और हम लोग इधर पढ़ा है, और परमेश्वर ने मूसा को और पहाड़ पर आने के लिए मैं उधर बात करूंगा, आप पहाड़ पर आ जाओ बोल के मूसा को बताया था। And he takes Joshua with him. और इनके साथ वो अकेले नहीं गया, उनके साथ जाशुआ को भी लेके गया। And so he went up the mountain, left the 72 elders at the foot of the mountain. और वो लोग दोनों ऊपर गया था, और जो साथ में आया था वो 70 लोगों को और अधिकारी लोगों को नीचे छोड़ के वो दोनों लोग ऊपर गया था। So when Moses and Joshua went up the mountain, God's cloud came on top of the mountain. और मूसा और जाशुआ ने और वो लोग दोनों मिलके और पहाड़ पर गया था, और परमेश्वर का और उपस्थिति और एक मेघ का रूप में और उनका महिमा नीचे उतरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
So for 6 days, Moses and Joshua sat here waiting for God to call down. और वो और मूसा और यहोशुआ ने और 6 दिन उधर इंतजार किया है और परमेश्वर क्या बात करेगा, उनका महिमा कम देखेंगे, उनका उपस्थिति को, उनका महिमा को हम लोग महसूस करेंगे, ऐसा बोल के वो लोग इंतजार किया. Amen. Interesting point. When after 6 days, God called Moses to enter the cloud. और वो 6 दिन होने के बाद और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है और आप आके एक मेघ में आप आके और ऊपर आ जाओ, ऐसे बोल के परमेश्वर बुलाया था. Where did Joshua go? Did he stay at the foot of the cloud or did he go with Moses? और अभी जाशुआ कहाँ गया? जाशुआ वो नीचे रह गया, नहीं तो मूसा के साथ वो भी थोड़ा और मेघ में चले गया. I don't know. I'm not suggesting he went up in the cloud, but he was in between God, Moses, and the 70 elders. और वो जाशुआ कहाँ गया मुझे मालूम नहीं है, और परमेश्वर और मूसा और उनका नीचे जाशुआ और उनका नीचे और सारे अधिकारी लोग खड़ा हो गया. Who is Joshua? We have to ask that question. और आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जाशुआ कौन है? Joshua and Caleb were the 2 spies that went into the promised land and said, "Let's go. God is with us." और जाशुआ और कालेब दोनों एक जासूस है, वो दोनों और वो दूसरा देश में जाके वो परमेश्वर हमको जय दे देगा, हम लोग जाएंगे और वो उनको वो राज्य को हम पकड़ेंगे, ऐसा बोल के विश्वास से वो लोग आगे निकला है. Joshua and Caleb were the only 2 faithful to God to know that he was in control. क्योंकि परमेश्वर के ऊपर में जाशुआ और कालेब को बहुत विश्वास है और परमेश्वर को बातों का ऊपर वो लोग बहुत और आगे और उनको विश्वास करके वो लोग आगे जा रहा था, इसलिए वो लोग कुछ अविश्वास की बात नहीं बात किया. Which tells us back then that the majority is not always correct or right. और इसलिए हम कह सकता है, और बहुत लोग ज्यादा लोग और एक चीज के लिए और बोल रहा है तो वो सच नहीं हो सकता है, कभी कभी ज्यादा लोग बोलने से भी वो गलत हो सकता है. But any of us are the majority with God. और हमारे बीच में और हम लोग परमेश्वर का और पक्ष में होने वाला रहना चाहिए. हालेलुया. You don't need my permission to do what God says. और आप लोगों को और कोई भी व्यक्ति का और परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को आप और साथ में जाना चाहे तो आप परमेश्वर के साथ और रास्ते में जाने के लिए और किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. You don't need the ministerial association to say, "Yes, you're right, Amos." और आपका और जो आपका मिनिस्ट्री लोग है वो लोग आके और आप बहुत अच्छा कर रहा है, वैसा करो, वैसा वो जो कर रहा है वैसा करो, वैसा करो, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं. परमेश्वर जैसा बोला है वैसा आप करना चाहिए. For 30 something years, my statement has been, और मैं 30 साल से मैं विश्वास में खड़ा है और प्रभु का मार्ग में चल रहा है, और मेरा जीवन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ. and you have my permission to use this. और ये बात और आप कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको बोलने के लिए. You know what a hair lip is where it causes you where you can't speak. और ऐसा आपने मैंने ऐसा आपको मुंह को ऐसा बंद रखने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ. आप कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, बोल सकता है. Right? Amen. I don't care if it hair lips the Pope of the Catholic Church. और
और मेरे खिलाफ और एक बड़ा और वाटिकन सिटी में एक कैथोलिक पोप बड़ा पोप है, वो मेरे खिलाफ वो आके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कोई भी बात बोलेगा, मैं उनको विश्वास नहीं करूंगा। मैं उनको अच्छे से मैं प्रभु के वचन से उनको बताएंगे। And Hallelujah. I'll bring it Hallelujah. closer to home. I don't care if it hair lips Pastor Jockin, Matahor, Amos, Joseph, Shallender, Moses, and Monty Hardaware. और आप लोगों का और जो आप लोग जो बोला है और परमेश्वर यीशु मसीह को आप नहीं मानेगा, तो मैं परमेश्वर यीशु मसीह को मानूंगा। और आप परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ने से भी मैं परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मैं मृत्यु तक मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलूंगा। If God tells me to do it, I'm going and doing it to the best of my ability. और परमेश्वर मुझे बताया आप जाके ये काम करो, ऐसा बोलने से मैं कितना अच्छा से मैं करना चाहता हूँ। मैं कितना पूरा ताकत से, पूरा मन से, पूरा तन से मैं ये काम करके और परमेश्वर को महिमा करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. If God tells you to do it, you do it. और परमेश्वर ने आपको ये काम करो ऐसा बोलने से कैसी भी परिस्थिति में आप वो काम को करना पड़ेगा। The church in the United States, the pastors think I'm crazy for coming to India by myself. और परमेश्वर और अमेरिका में और भाई का और चर्च लोग है और भाई का और दोस्त लोग है, वो सारे लोग सोच रहा है वो एक पागल है, ये क्यों भारत में जा रहा है, वो अकेले जा रहा है, वो किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा है, ऐसे बोल के भाई को गाली देता है। This is where Joshua and Caleb were. ऐसा है और जोशुआ को कालेब को भी वैसा है हो गया। सब लोग उनको खिलाफ हो गए, खड़ा हो गया, बहुत लोग उनको खिलाफ खड़ा हो गया, उनको रुकने के लिए चाहता था। Amen. We want to be like Joseph, Joshua, and Caleb. हम भी ऐसा है जोशुआ और कालेब का जैसा, हम भी और प्रभु का मार्ग में आगे जाने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया, थैंक यू। Hallelujah. 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 So on the seventh day, God called Moses and said, "Come up into the cloud and visit with me." और सातवां दिन में और परमेश्वर वो एक मैग में आके और मूसा को ऊपर बुलाया था और मैं ऊपर आ जाओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा बोल के बुलाया था। And so Moses left Joshua in between and went up in the cloud. और मूसा ने जोशुआ को छोड़ के और मेघ में चले गया और परमेश्वर और जोशुआ का बीच में मूसा खड़ा हो गया। And see the picture. You got the Israelite nation. You got the 70 elders. और आपने वो पिक्चर को आपने महसूस कर दीजिए। और नीचे और बहुत लाखों लोग इस्राएल लोग हैं, उनका ऊपर 7 अधिकारी लोग हैं, 70 अधिकारी लोग हैं, उनका ऊपर जोशुआ है, उनका ऊपर मूसा है, उनका ऊपर परमेश्वर है। You had Joshua, and then you had the cloud around the mountain. और बीच में जोशुआ खड़ा हो गया है और उनका चारों तरफ एक मेघ आके उनका ऊपर आके खड़ा है। And then on top of the mountain, it says the Israelis saw the glory of God that looked like a consuming fire on the top of the mountain. और वचन में लिखा है और एक पहाड़ का ऊपर में एक आग का रूप में और जलते हुए आग का रूप में परमेश्वर खड़ा हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, Hallelujah. 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 That consuming fire is what God wants us to have in our hearts. वो जो और अग्नि है और जलने वाला और बहुत तेजी से जलने वाला अग्नि है, वो ऐसा अग्नि और परमेश्वर हमारा अंदर में, हमारा हृदय में हम जलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया।
I want Hallelujah. every one of us to have our hearts set on fire by God. मैं बहुत बार आपसे बोला है, हमारा हृदय हमने और पवित्र आग से हम लोग और जलने के लिए हम लोग प्रार्थना करना, ऐसा बोलकर मैं बहुत बार बात किया था आपको। I want that fire to consume us, that we will be as Peter was when he walked down the road and he was focused on God. और ऐसा वो आग हमको जैसा जलना है, जैसा पतरस ने और रास्ता में जाते समय, और वो और जैसा वो लोग बहुत लोग और रोग पीड़ित है, वो सारे लोग उनका छाया के नीचे में और छाया लगा तो वो लोग और चंगा हो गया, ऐसा ऐसा हम बनने तक हम लोग वो आग से हम लोग जलना है। हालेलुया, थैंक यू Hallelujah. जीसस, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is the intensity I want every one of us to have. और वो जैसा है हमारा, हम सारे लोगों का अंदर ऐसा आग होना चाहिए, और हम लोग परमेश्वर का मार्ग में जानने के लिए। The only way we're going to get there is here praying for God to change and mold us. और हम लोग ऐसा वचन में कैसा लिखा है, वचन पढ़ के और जैसा परमेश्वर ने हमको बोला है, उनका द्वारा हम लोग आगे जाना है, प्रभु को महिमा करना है। It is not going to come from me teaching you on Tuesdays and Fridays. और वो मैं आपको गाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बोलने वाला नहीं हूँ, और मंगलवार को और शुक्रवार को आके मेरा बातों के द्वारा आप लोग नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या बोला है वैसा आप चलने से परमेश्वर को महिमा हो जाएगा। Amen. It is not going to come from us reading men's Joseph Butte. It is not going to come from us meeting men's commentary on the Bible. और ऐसा है, और परमेश्वर का वचन के द्वारा और कुछ कमेंट्रीज लिखता है, और उनका हिसाब से हम लोग वचन को हम लोग समझने से भी वो भी अच्छा बात नहीं है। It's going to come from the Holy Spirit's commentary in our hearts. और हम लोग जैसा पवित्र आत्मा हमको बताएगा, पवित्र आत्मा हमको समझाएगा, वो वैसा वो समझ पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात हमको बताया था वैसा रास्ता में हम लोग जाना है। Okay, I hope you're hungry for the Lord now, because we're going to see what happens in 40 days on the mountain. और आप लोग अभी और खास बात अब सुने जा रहा है, क्योंकि अभी 40 दिन वो पहाड़ पर और मूसा और यीशु और परमेश्वर और जाशुआ और तीनों ने और उधर रह गया है। He's on the mountain with God for 40 days, plus the 6 days waiting on God and the few days at the bottom of the mountain. So we're probably talking about 50 days Moses was away from the people. और वो ऐसा कुछ दिन परमेश्वर के का उपस्थिति में, और 6 दिन उन्हें परमेश्वर के उपस्थिति के लिए इंतजार किया, और उसके बाद कुछ दिन और परमेश्वर का मेघ में जाके परमेश्वर को महिमा को देखा, और कुछ दिन परमेश्वर मूसा से बात किया था, और वो आने जाने में 10 दिन लगा होगा। सारे 50 दिन और इस्राएली लोगों से और अलग होके परमेश्वर का उपस्थिति में और मूसा जाने के लिए और प्रयास किया था। Amen. And the people all could see the smoke and the fire for 40 days. और वो और नीचे लोग लाखों लोग इस्राएल लोग ऊपर पहाड़ पर देख रहा था, और ऊपर पहाड़ पर परमेश्वर का आग आ गया था। वो सारे आग और लोग देख रहा है, और वो लोग क्या है ऐसा बोल के डर रहा है। Okay, so we're going to start and go quickly in chapter 25. और हम लोग 25वां वचन में हम लोग जाएंगे। Understand God's plan is perfect. और आप समझाइए, आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है ये बहुत अच्छा योजना रखता है हमेशा हमेशा। And so the first part is the offerings for the temple. और उधर हम लोग पढ़ता है,
और कलीसिया में हम लोग जो देता है और दान देता है उसके बारे में उधर लिखा है। These are offerings of gold, silver, bronze, blue, purple, scarlet yarn, fine linen, goat hair, etc. for building all of the thing God wants. और जो इधर सोना है, चांदी है और बहुत और बहुत खास का चीज है और बहुत और परमेश्वर का और उपस्थिति में और लोग लेके आके और परमेश्वर को देने वाला, दान देने वाला चीज है। Verse 8, then have them make a sanctuary for me, God, and I will dwell among them. और 25वां अध्याय निर्गमन का 25वां अध्याय 8 में हम पढ़ने से और परमेश्वर ने उनसे बताया था, और मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ, एक अच्छा पवित्र स्थान आपने बना दीजिए, मैं आपके बीच में रहूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर उनसे बताया था। 10 through 22, he describes the ark to Moses. और 10 से लेकर 22 तक हम पढ़ने से और जैसा वो और निबंधन का और मंदस कैसा होगा, वो उनके बारे में क्या करना है, कैसा करना है, मूसा को और परमेश्वर ने बताया था। So God tells Moses to build the ark with these cherubim angels looking over the center of the ark. और परमेश्वर ने बताया था एक निबंधन मंदस को बना दीजिए और उनका ऊपर एक दो स्वर्गदूतों का जैसा एक बना दीजिए और उनका और नीचे भी ऐसा बना दीजिए, ऐसा बोल के परमेश्वर ने सारे चीज मूसा को बताया था। Read verse 22. और 22 को पढ़ेंगे और मनोरमा दीदी और निर्गमन और 25 का अध्याय 22 का वचन पढ़ लीजिए। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। आमीन। आमीन। Amen. आमीन। God says, you build this cherubim, you put this cover over the ark, and I will meet with you. और परमेश्वर मूसा से बताया था, आप दोनों चेरुबों को इधर एक ऐसा रूप बना दीजिए और एक नीचे ऐसा अच्छा जगह बना दीजिए, मैं वो जगह में चेरुबों का बीच में आके मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा बोल के मूसा से बात किया। And so this cover that God is going to sit on is called the mercy seat. और परमेश्वर आके और बैठता है, रहता है, वो चीज को बाइबल में लिखा है, ये कृपा, ये दया करने वाला और ये सिंहासन है। That mercy seat is important because that's where God will give direction for the people of Israel. क्योंकि और इस्राएल लोग बहुत परमेश्वर का खिलाफ वो लोग काम किया है, परमेश्वर को और व्यतिरेक में और काम की पाप किया है, और उनको और दया से करुणा से उनको उनसे बात करने के लिए परमेश्वर आया है, इसलिए वो दया का और सिंहासन बोल के लिखा हुआ है। That is the same mercy seat that we go to when we ask for salvation and repentance. वो वैसा है, हम भी इस धरती में हम जान के नहीं जान के हम पाप करता है, परमेश्वर से अलग होता है, हम परमेश्वर को जानने के बाद वही जगह में आके और दया का सिंहासन को आके, करुणा का सिंहासन के सामने आके झुक के हम लोग उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. 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 There is a beautiful song that says, let me run to the mercy seat. Let me run to the mercy To the seat mercy of God. seat. और वो वचन में एक जगह में लिखा है, और मैं और दौड़ दौड़ के मैं वो दया का सिंहासन के सामने मैं आ जाऊंगा, परमेश्वर को मैं दया और करुणा के और प्राप्त करूंगा, उनका कृपा को मैं प्राप्त करूंगा, उनका दया को प्राप्त करूंगा, ऐसा बोल के वचन में लिखा है।
So the Lord has asked Moses to build the most important thing first, the Ark of the Covenant. और परमेश्वर और मूसा के बात करना और शुरू में और जो निबंधन का मंदस के बारे में और उसका जैसा क्या करना है वो उसका अर्थ क्या है उनके बारे में पूरा बताया था. Inside that ark will be 4 things, I believe. और वो और निबंधन का मंदस में और कुछ चीज रखने के लिए और परमेश्वर ने बताया था. The Ark of the Covenant will contain the 10 Commandments, और वो निबंधन मंदस में और 10 आज्ञा और परमेश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञा फलक इसमें रखता है. it will contain Aaron's rod that bloomed. और जैसा है और आइगुप्त में और जितना महान कार्य किया हारून का एक लाठी है, वो लाठी हारून का लाठी भी इसमें है. It will have a jar of manna that God provided. और जो एक कटोरी से और परमेश्वर ने दिया हुआ मन्ना भी वो उसमें रखता है. And my mind just went blank on the 4th thing. और ऐसा है कुछ चीज ने और परमेश्वर ने और उसमें रखने के लिए परमेश्वर चाहता था. Okay. The next scriptures are about the table that is built and overlaid with God. और उसके बाद और जो और परमेश्वर का उपस्थिति में एक जगह में और एक मेज को रखने के लिए परमेश्वर उनके बारे में भी बताया था. The importance of that is verse 30. और जो इसलिए प्रमुख है उसके बारे में 30वां अध्याय में बताया था. और मेरा मेज पर मेरे आगे ब्रेड की रोटियां नीचे रखा करना पड़ेगा. हालेलुया. The Lord wants the Israelites to provide bread for him all the time. और परमेश्वर चाहता है और मेरे सामने आप एक मेज रखकर और उसमें एक हर दिन उसमें रोटी रखना चाहिए, वो मुझे चाहिए ऐसा बोल के परमेश्वर ने बताया था. They would change that bread out however often, every day or. और वो लोग हर दिन आके वो रोटी को और पुराने रोटी को निकाल के नया रोटी रखना है, और नया दिन में नया रोटी रखना पड़ेगा. I believe they put hot, fresh bread so that aroma would go up to the Lord. और मैं सोचता हूँ और ये पढ़ने के बाद मुझे समझा है और वो लोग बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश का रोटी हर रोज लेके आके और परमेश्वर के सामने रखता होगा और उसका और अच्छा खुशबू से परमेश्वर बहुत खुश होता था. Which God wants to smell our radiance, our love, our desire for him. और उनको वो बात में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा अर्थ हो गया और परमेश्वर भी हमारा और जिंदगी को, हमारा और परिस्थिति को, हमारा सोच को, हमारा मन को देखकर और वो बहुत वो अच्छा एक सुगंध का द्रव्य का रूप में और परमेश्वर का और महसूस होना चाहिए. हालेलुया. थैंक यू. Hallelujah. Hallelujah. आमीन. Verses 31 to 40 talk about the lampstand. और उसके बाद निर्गमन का 25वां अध्याय और 31 से लेकर 40 तक हम पढ़ने से और एक दीप स्तंभ का बारे में उधर लिखा है. Chapter 26, 1 through the whole chapter. और 26वां अध्याय में हम लोग 4 अध्याय को हम लोग पढ़ने से और भी अच्छा बात हम देख सकता है. Talk about the tabernacle to be built around the ark. और उसके बाद और जैसा और निबंधन का मंदस रखने के बाद और उस जगह में चारों तरफ एक अच्छा सा एक गुड़ार को बनाने के लिए अति पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान में ऐसा रखने के लिए परमेश्वर चाहता था. It makes curtains of fine linen, blue, purple, and scarlet yarn. और उसमें बहुत सारा
और कपड़ा को रखने के लिए, कर्टन को रखने के लिए परमेश्वर चाहता था इसमें, और नील और बहुत ऊदा और बहुत रंग में, अच्छा रंग में, परमेश्वर का पसंद वाला रंग में उसको रखने के लिए परमेश्वर चाहता था। has gold hooks to hold it in place around the tabernacle. और कर्टन को रखने के लिए और सोने का हुक को और उनके साथ हैंग करने के लिए, और परमेश्वर उनको बताया था, सोने का हुक को रखा था। It has gold posts coming down that are in pots, so it will stand upright. और उसका अर्थ क्या है कि और जो लोग इसमें आ रहा है वो लोग अच्छा जिंदगी जीने वाला, ऐसा और उनका जिंदगी और परमेश्वर का इच्छा के द्वारा रह के और उनका पवित्र होकर रहने वाला इसका अंदर आएगा, ऐसा बोल के अर्थ है। My thought is that the pots have some kind of concrete in it that will hold the pot, hold it in place so they can carry the ark, the tabernacle. और ऐसा है, और कुछ चीज उधर रखा हुआ है, वो उनका और उनको एक अच्छा एक मजबूत बनाया है, और उनको और निबंधन मंदस को ऐसा नहीं हिलने के लिए वो रखा होगा, ऐसा बोल के मैं सोचता हूँ। And so when the Lord says move, they will grab the pole and they will have the ark on the gold poles to carry it, and they will walk moving. और कहीं परमेश्वर ने उनको बोला है, और आप मेरा और निबंधन मंदस को लेके जाओ, ऐसा बोल के बोलने से वो लोग सारे और ये साइड में रखे, और सोने का और उनके द्वारा बनाया हुआ, और उनसे वो निबंधन मंदस को लेके जा रहा था। Then at 27 talks about the altar of burnt offering, which will be outside the tabernacle for sacrifices. और उनका 17वां अध्याय में और 27 चैप्टर में हम पढ़ेगा तो और बाहर का जैसा वो परमेश्वर का वो पवित्र स्थान में कैसा रहने वाला चीज को बारे में बताया था। Then the courtyard. Here's the tabernacle with the Ark of the Covenant in it, and then a courtyard for people to come into. और पहले एक छोटा सा जगह में और निबंधन मंदस को रख के, और उनका चारों तरफ कर्टन से कवर करके, और उनका बाहर का और स्थान में भी और अच्छा से और कर्टन से बना के, और उनको एक बाहर का जगह ऐसा बोल के बुलाता था। And when you see the temple that Solomon built and others, this is the layout of the temple. और उसके बाद सोलोमन ने एक बड़ा टेम्पल बनाया था, और वैसा है अभी ये मूसा को जैसा बनाया था, बनाने के लिए बोला था, उसी का और प्लान से वो लोग और परमेश्वर को मंदिर को बनने के लिए और वो लोग और कार्य कर दिया। Verses 20 and 21 talk about the oil to be burnt in the lampstands 24 hours a day. और 27वां अध्याय में 20 और 31 का वचन में हम पढ़ने से, और एक दीप स्तंभ में हमेशा दीप जलने के लिए, और इसमें तेल भरने के लिए कैसा भरना है, कितना भरना है, उन लोगों को बता दिया था। And I said that wrong. It is to burn from evening to morning. और वो दीप स्तंभ वो शाम से लेकर और सुबह तक वो लोग कैसा जलना है, और वो लोग नहीं बुझने के लिए हमेशा और शाम से लेकर सुबह तक ऐसा दीप जलते जलते रहना है, सब बोल के मूसा को बताया था। When we get to 28, we are talking about what the priest will wear before the Lord. और 28 का अध्याय में हम पढ़ने से, और परमेश्वर ने मूसा को बताया था, और जो याजक रहता है और सामने आके और बलि देने वाला और बलि चढ़ाने वाला और विनती को परमेश्वर को बोलने वाला, उनका कपड़ा कैसा रहना है वो
Read verse 3 through 5. और मनोरमा दीदी 28 का निर्गमन का 28 का अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए। जी सर। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनवाए होंगे वे ये है, अर्थात सीना बंद और येपोद और बांगा, चारखाने और अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनवाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी रंग और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। आमीन। हालेलुया। आमीन। Amen. Amen. These garments will be beautiful in beautiful, bright colors. और वो वचन में हम लोग पढ़ा है, और जो लोग याजक पहनने वाला वो और कपड़ा है वो बहुत और बहुत तेजी से और चमकने वाला और कपड़ा पहनने के लिए बताया था। And then they're going to make an ephod that will fit over their clothes and will have beautiful stones in it. और उनका कपड़े के ऊपर एक एफोद को वो लोग पहनने के लिए भी बोला था, और उस एफोद में और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा और बहुत खरीद और बहुत महमूल्य का और पत्थर को रखने के लिए बताया था। This is verses 6 through 14. और आप लोग और 28 का अध्याय 6 से लेकर और 14 तक पढ़ेगा तो उसके बारे में लिखा हुआ है। And it says in verse 9, they're going to take 2 onyx stones and engrave the names of the sons of Israel. और उन्हें और 9 का अध्याय में 9 का वचन में बताया था, और कुछ पत्थर लेके और इस्राएली लोगों का और जो नाम उसमें और उनका जो इस्राएली पुत्रों का नाम और उनको लिखने के लिए बताया था। And they would then mount them on the shoulders that would come down the front with the 12 tribes of Israel. और उनका याजक का और जो वस्त्र में और उनका ऊपर में एक बड़ी मणि ऐसा रखने के लिए बोला था, और 12 मणि रहता है, और उनका अर्थ क्या है कि 12 गोत्र है, इस्राएल का 12 गोत्र है उसके, और उनके बारे में और परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करने के लिए वो लोग जा रहा था। Then we go to the breastplate, which is in 15 through 30. और हम लोग और उसके बाद और जो हमारा और ब्रेस्ट का और जगह में रखने वाला एक प्लेट रहता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। This breastplate will fit in the middle of the tribes of Israel. और ये एक 12 और जो गोत्र है उनका बीच में एक ब्रेस्ट प्लेट को रखने के लिए परमेश्वर बोला था। 15 says, fashion a breastpiece for making decisions. और उनका और जो उनको 15 वचन में हम लोग दिखा और पढ़ेगा तो और उधर लिखा है, और जो ऐसा वो ब्रेस्ट प्लेट को रखता है वो लोग जो भी निर्णय लेने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है। How did God communicate with the priest when they went into the Holy of Holies to meet with God? और कैसा और परमेश्वर याजक से बात करता था, और परमेश्वर याजक से बात करके याजक परमेश्वर से कैसा बात करता था। And it wasn't just the priest that used this, the kings did. King David used it. और ऐसा है, और परमेश्वर और दावीद का राजा भी और परमेश्वर का और उपस्थिति में जाके जैसा बात किया है वैसा है याजक भी बात करता था।
This breast piece had two very important things in them. And if you look down into verse 29, read 29 to 30, 29 and 30. और मनोरमा दीदी और 28वां अध्याय और 29 वचन और 30 वचन पढ़ लीजिए। मनोरमा दीदी और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय की चरणसार और अपने हृदय के ऊपर और इस्राएलियों के नामों के लगा रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण निया रखे। और तू न्याय की चपरास से उशीम और तुमीम और रखना। और जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब वे उनके हृदय में ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने निया लगते हैं। My neighbor's dog is outside. Yes, sir. She is not Come on, let's go sparing about downstairs. it. Come on, let's go. That's why it is Go out barking. and play with our. She is not sparing it. She's her presence. అన్నా రేపు జనవరి వచ్చేటట్టు తీసుకొచ్చామన్నా Anna. Very much. Hallelujah. కుక్కని తీసుకురామంటున్నాను. Funny story. छोटा सा मैं आपको कहानी सुनने के लिए चाहता हूँ। Our neighbors have been gone for over a month. मेरा घर का पड़ोसी है, वो जाके 1 महीने से ऊपर हो गया। And they have 2 big puppies that love me. वो पड़ोसी लोग को 2 बड़ा कुत्ता है, वो सार को बहुत पसंद करता है। It makes their daddy jealous because they love me more than him. और जो पालता है वो आदमी सार से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उनका कुत्ता सार को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उनको पसंद नहीं रहता। So Saturday we had a little playtime with the dogs. और पिछले और शनिवार को हम लोगों को थोड़ा समय मिला है, हम लोग वो कुत्ता के साथ खेलने के लिए हम लोग थोड़ा समय बिताया है। And those 2 dogs were between my legs, around me, and tackled me to the ground. और जो 2 कुत्ता और दौड़ के आके मेरे और पैर में बैठा है और मुझे ऐसा करके मुझे नीचे फेंक दिया था। गिरा दिया। And I'm laying on my back and they're crawling all over me, licking me. और वो मुझे नीचे गिरा के और मेरा ऊपर आके और सारे और उन्हें और ऐसा उनका जीभ से ऐसा करने लगा। And then my dogs get jealous and told them to move. That's my daddy. और सार का और जो कुत्ता है वो देखा है और वो लोगों को उन लोगों को भागा दो, क्योंकि ये मेरा पापा है, आप जाओ आपका पापा के पास, ऐसा बोल के बहुत गुस्सा कर दिया। We have exciting times here at my house. और ऐसा है, और ये शनिवार को बहुत अच्छा और समय हमने बीता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So when we go back to the scripture, chapter 28, verses 29 and 30. और हम लोग 28 वचन को हम जाएंगे, अभी हमने पढ़ा है, और 29 वचन और 30 वचन हम पढ़ेंगे। We see this
ephod with a breastplate in between, in the middle. और एपोद का बीच में और एक ब्रेस्टप्लेट को और मध्य में रखा है And it is a memorial before the Lord. और परमेश्वर के सामने एक ज्ञापिका सूचक के रूप में और रखने के लिए परमेश्वर ने बताया था And what it is, you got a Urim and a Thummim, which is a yes/no answer. और उसके बाद और उरीम और तुमीम के बारे में और रखने के लिए भी बताया था वो उरीम और तुमीम क्या है Is it more than that? I'm sure it is. और ब्रेस्टप्लेट के भी खास करके वो चीज है यस और ब्रेस्टप्लेट से भी खास करके चीज है All we know is from the scripture is that it was used to talk to God. और वो वचन में हमको वो सारे चीज क्यों रखने के लिए चाहता है कि और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर और आहारों से बात करने के लिए ये सारे चीज पहन के आने के लिए बोला था And it says, and thus Aaron or the high priest will always have a means of making decisions for the Israelites. और इसलिए इस्राएल लोगों के बारे में कोई भी निर्णय लेना चाहता है तो और जो प्रधान याजक होता है और आरोन और प्रधान याजक कोई भी परमेश्वर के सामने बात करने के लिए जाएगा तो ये सारे चीज और पहन के जाना पड़ता था Okay, y'all ready for the punchline? और आप सब लोग और इसके बाद बहुत अच्छा चीज को सुनने के लिए आप सब लोग तैयार है Amen. What did God give us at Pentecost that symbolizes and is the breastplate? और पेंतकोस्त का दिन में और परमेश्वर ने और स्वर्ग से जो आग को निकाल के और उनका चेला लोगों को और 120 लोगों को और ये और एक रूम में और परमेश्वर ने दिया है वही चीज ये ब्रेस्टप्लेट का और हम लोग समझ सकता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Just as it Hallelujah. says in that scripture, thus Aaron will always bear the means. और वचन में लिखा है और परमेश्वर और आरोन ने ये चीज को हमेशा पहनने के लिए और चाहता था हमेशा उन्हें पहन के घूमा है At Pentecost, the Holy Spirit fills our hearts in salvation, guaranteeing our salvation and communication with God. और ऐसा है और पंतेकोस्त का दिन में और परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा के रूप में और उनका और 120 लोगों का और हृदय में भरा है वैसा है हमारा हृदय में भी परमेश्वर भरा के और हमको उद्धार दे दिया ऐसा बोल के एक निर्णय और निश्चय करके Amen. परमेश्वर रखना चाहता है हालेलुया थैंक यू Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah, Jesus, hallelujah. for how you set this up. और वो आपका वो ऐसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति को आप कभी महसूस किया You didn't just all of a sudden make a decision to send Jesus to die on that cross and, oh, wait, I'll send the Holy Spirit back. और यीशु मसीह और क्रूस में बलिदान होने के बाद और नीचे और उतरने के बाद जी उठने के बाद और तुरंत मैं आपको पवित्र आत्मा दे दूंगा ऐसा बोल के नहीं बताया था All of this was planned before the foundation of the earth. और यीशु मसीह इस धरती में आके और बलिदान के रूप में मरना और उनका और पवित्र आत्मा और पहले और इस धरती में आना ये सारे चीज ये जगत का और प्रारंभ में और परमेश्वर का योजना है हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. He has planned that you and I would be here today to see this in Exodus and how it ties into Jesus' death, burial, resurrection, and the Holy Spirit.
और हम लोग आज और हम सब लोग मिलके और प्रभु का ये वचन के बारे में और प्रभु का और बलिदान के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में हम सब लोग और ध्यान करने के लिए भी परमेश्वर ये जगत का प्रारंभ में और परमेश्वर का योजना के द्वारा हम लोग इधर आया है। हालेलुया, थैंक यू, Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया, Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। Now, I got some bad news because I'm not going to be able to finish all I wanted to talk about. और मैं अभी ये मेरा वचन को मैं नहीं खत्म करूंगा। मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको इच्छा है नहीं इच्छा है मुझे मालूम नहीं है। इट्स गुड न्यूज सर, नॉट बैड न्यूज। Oh, it's not. यस सर, प्रेज द लॉर्ड। Oh, I Praise the tell you, Lord. God is so good. यस सर, So good. Yes. All the time. आमेन, All the time. आमेन। Any All the time. questions before we sing a song or आपको comments? और ये आप गाना गाने सुनने से पहले आप थोड़ा कोई भी आप बात करना चाहे तो वचन के बारे में आप बात करना चाहे तो आपको कैसा महसूस किया आप बताना चाहे तो आप बात कर दीजिए। और आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता दीजिए। आपको कोई गवाही होने से भी आप बता दीजिए। प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, आमेन। Hallelujah. Sir, I want to speak, sir. Stephen, sir. Yes, Vijay, sir. This is Joseph, sir. Joseph from India, Vijayawada, Andhra Pradesh. Yes, Brother, sir. we are waiting for your coming. Yes, we are waiting for Jesus' second coming. We are waiting for you to receive you. We are waiting for your coming to receive you to India. Thank And you. I'm ready to see you. yeah, thank you for that, brother. And I also am praying. No, we have been constructing church for the last 10 years, as I told you this earlier. And in this month, we are thinking that we are believing that we are going to build up 2 bathrooms, one baptism tank, and one water facility. We needed, brother, before Christmas. We believe that we are going to build it, brother. And I have been telling you Amen. to pray for this. Hope you understand my necessity and need, and please pray for me. Thank you for that. I Yes. also thank brother Jachin and also brother Manohar and Shailendra and everyone for cooperating with me in this record. Thank you, brother, and God bless you. We really enjoy your talk, and it's very inspiring and it's motivating. And it's happened to be Joshua and Moses and Aaron. These people are all actually are happen to be the leaders and role model to us, and we have to follow their footprints in faith, Yes. following God. Amen. Thank you for your wonderful message and the text. I praise God for you and all the other brothers like Jachin and Shailendra and Manohar. And all. Thank you, brother. Thank you. I completed. It's completed. Thank Thank you. you. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सर। जय मसीह सर। जय मसीह सर। बहुत सुंदर वचन था सर आज, हाँ और बहुत ही अद्भुत था कि कैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है और कैसे परमेश्वर ने डिजाइन किया कि परमेश्वर के पास जाना है और पवित्र आत्मा को पाना है। सो सचमुच खुद बहुत ही पुराने नियम से सर नए नियम में आना और उनके वस्त्रों को जो यहोशू पहनता था उसको उस तरह से बताना, कैसे उसके कपड़ों पर 12 गोत्रों का वो निशान था और कैसे डेली फ्रेश होना है उस ब्रेड के तरह, कैसे सुबह से शाम तक उस लाइट की तरह जलना है प्रभु में। इस तरह बहुत ही सुंदर वचन था सर। आई एम वेरी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे हृदय को बहुत छुआ इस वचन को, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर वचन के लिए। और मेरा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भी है सर। पिछले दिनों में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तो मैं गया था, तो उस समय जब काटा तो उस समय में मुझे थोड़ा फीवर हो गया, हेडेक हो गया, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। लेकिन प्रभु की दया से इंजेक्शन लगवाता रहा, और आगे भी अभी 2 इंजेक्शन और लगवाना है। और प्रभु की दया से मैं पिछले बार तो जब मैं मीटिंग में ज्वाइन था तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी,
लेकिन प्रभु की दया से इस बार मैं बहुत अच्छा हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो और आगे भी अच्छी रीति से प्रभु संभाल के रखे और सारे मेडिसिन को कोर्स पूरा करने में सहायता और मदद करे। थैंक यू सर। Amen. Thank you. Hallelujah. Brother, Sir, praise the Lord, sir. brother, Devanand is telling today's word is a wonderful word, and that is you tell about the how the high priest wear that ephod and breastplate and Urim and Tumim and everything, and speaking with God, and also the people will put a very fresh bread, and that bread will give good aroma, and that God will have that good aroma, and very happy about that. Like that our lives also, we every time we have to speak with God, in a experience have speaking with God, and through our lives the sweet aroma will come, and through our words and through our thoughts, and God will be very pleased, and God will be very much Hallelujah. help blessing us. That will be very much blessing to me to hear, and Thank you. I really blessed through this message. Thank you so much for sharing this word today. And yeah, I have and he is telling a prayer request, and recently one dog, street dog, bite him, but past 2 weeks he is very much fever and headache, and he's very weak, but through your prayers, and through all the God's grace, and God healed him and delivered him from that dog bite, and he had 3 injections in this week, and he had to take 2 more injections for that the dog bite, that uh, please pray, and God will completely heal him, and deliver him from that dog bite, and nothing will be Amen. happen to him. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And it is Sir, praise the all Lord. of our prayers, Yeah. not just Yeah. mine. Yeah. Amen. Amen. uh, All are praise. Yeah. यस यस सब लोग भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, देवानंद भाई के लिए, और प्रभु छू के और भाई को चंगा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। Amen. Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Sir, వందనాలు సార్. అన్న వందనాలు అన్న. సార్ దేవుని కృపను బట్టి ఈ రోజు లైవ్ లోకి రావడం చాలా సంతోషకరం. మరి ఈరోజు నిజంగా కాలేబు యెహోషువ గురించి చెప్తా ఉండగా మరి అది వారిద్దరిని మరి మాదిరికరంగా తీసుకుంటే అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య జరిగించని మరి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈరోజు లైవ్ లోకి రావడం వలన దేవుడు కాలేబును యెహోషువను మన ఎదుట పెట్టి దైవజనుల చేత మాట్లాడడం నిజంగా చాలా సంతోషపడుతున్నాను సార్. ఆమేన్. దాన్ని బట్టి నేను ఎంతో ఇంకా ముందుకు కొనసాగడానికి దేవుడు నడిపించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. అంతేకాదు సార్, ఆ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ దయతో గమనించండి, ఆలకించండి. పోయిన వారంలో తెలియపరిచాను. ఆ మందిరం అదే సార్, ఈ వారంలో కూడా నిన్నటి దినాన మరి రాజమూర్తులు కొంచెం లేని టైం వచ్చి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టి లోపల కొంచెం చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్. నేను లేని టైం వచ్చి అంటే రాత్రి పూట, పగులంతా మందిరంలో ఉంటున్నాం కానీ రాత్రి పూట సెక్యూరిటీ లేదు, దానివల్ల డోర్ మరి మందిరం ఉంది. ప్రార్థన చేయమని తెలియపరచాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. తప్పకుండా అన్న, తప్పకుండా. నేను మొన్న మీరు ఎస్టిమేషన్ పంపించారు, నేను అయ్యగారికి చెప్తాను. అయ్యగారు దాని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారన్న. మరి దేవుడు మరి త్వరలోనే మీ యొక్క ఆ యొక్క అవసరం ఏదైతే ఉందో తీర్చిపోతా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పాస్టర్ ఎమిలీ బాబు ఈజ్ టెల్లింగ్, and today you told about Caleb and Joshua, and they are facing many troubles from the many people. They are very few, there two only stand for God, but many lakhs of people came against him, and they're telling many bad words and want to stop them, but still they are stand for God and follow in God's ways, and follow his
with more faith, and that is the thing is very much impressed me and inspired me. We must also walk like Caleb and Joshua, and in all our troubles, in all our situations, we must go forward with great encouragement and courage, and with more faith. That will be a great blessing to me. Is very Amen. touched my heart. Thank you so much for sharing this wonderful message. And also he's Amen. requesting to అన్న అన్న request అన్న ప్రేజ్ లాడ్ అన్న Anna. అన్న ప్రేజ్ లాడ్ అన్న అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, వందనాలన్నా. అన్న ఆ రోజు కొద్దిగా ఆ రోజు 3 రోజుల కింద ఆ రోజు 3 రోజులు పేరు ప్రెజర్ ఎక్కువయ్యి చాలా ఆ రోజు చేసుకున్నాను. ఆ రోజు చేసుకున్నప్పుడు తెల్లారే మీరు కాల్ చేశారు నాకు. Anna, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Anna, brother Badeti Kumar is telling that time you remembered brother Badeti, and he is with so much depression, and he is so much agony, and he's cried whole night, and ఫుల్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను చేసుకున్న తర్వాత మీరు కాల్ చేశారు. ఎందుకు జాయిన్ అవుతలేరు, పెద్ద పాస్టర్ గారు చెప్తున్నారని నా మాట ఖచ్చితంగా ఆలకించినట్టు తెలిసింది అప్పుడు. and that time he understand, and that time you asked for him to come to join in that meeting. That time I called him personally and asked him why you are not joining. That is the same day. After the same day, God is calling him to back to the joining in the meeting and with his people to encourage, to comfort. That time the I thought that call God made through you, and God had a plan for me to deliver me from my depression and my agony, and to comfort me. Thank you so much. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. ఈ 3 రోజుల నుంచి నేను అనుకున్నాను, నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను ఇంతగా ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాను, కానీ ఎవరికో చెప్పుకోలేకపోతుంటే కూర్చొని నన్ను ఇంత నిజాయితీగా ఉండమన్నావు, అన్ని చేయమన్నావు, మరి నా పరిస్థితి ఏంది, అసలు నన్ను ఎందుకు ఇంతగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, నా వల్ల అవ్వట్లేదు, ఇక నేను సాతానుతో జయించిన శక్తి లేదు, నీకు సరెండర్ అవుతున్నా ప్రభు అని చెప్పి సరెండర్ అయిపోయాను అక్కడికి. నేను సరెండర్ అయిపోగానే అప్పుడు తెల్లారి అదే నైట్ చేసుకుని తెల్లారి మీరు కాల్ చేసి అయ్యగారు ఇట్లా మీకు నాకు గుర్తు చేస్తారు సంతోషం అనగానే నాకు మస్తు కన్నీళ్ళు లాగలేదు. మస్తు అంటే ప్రభు అనేది ఖచ్చితంగా నన్ను అంటే చేతిలో చెక్కుకున్నా అంటారు కదా వాక్యం, ఆ టైప్ లో నాకు గుర్తొచ్చేసింది అన్నమాట. అంటే నీ చెయ్యి నేను విడవలేదు అన్నట్టు అని నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అందుకే ఇప్పుడు ఇది మూడోసారి ఇప్పుడు గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతున్నాను. నాకు హిందీ నాకు రాదు, అయినా కానీ ఆ మాటలతోటి నా ధైర్యం వస్తుంది. Thank you, Jesus. Hallelujah. అయ్యగారు చెప్తానన్న, Badeti Kumar, the whole night is cried and cried and cried, and before God, and God, I have no way and what to do. I don't have how I have to handle all the things before me. Like that, I cried and cried, but I trust you, Lord. I trust in you because you deliver me. You will take care for me. Like this, he take a decision. That time, God came and comfort him. I will be with you. That same day, next day morning, I called him, Hallelujah. and that will he feel like that God answered me. And whenever we submit ourselves to before God, whenever we cannot handle our things with our own strength, and submit to God, then God will take care for us. God will strengthen us. God will lead us. That is the thing I learned through the situation. Thank you so much for your prayers. Amen. I don't know. Amen. I don't know Hindi. I don't know this language Hindi, but still I came to hear. And but by the miracle power of God, the words are when I hearing the words, that words are understanding me, and I learning very much. That is the Holy Spirit doing in our lives. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. That believe that has been my నాకు ఒకసారి prayer for a long time, that I could understand what y'all are saying.
मैं भी भाई सार भी चाहता था कि हम सब लोगों का और ये मीटिंग में आके आके सार भी हिंदी सीख के हमसे हिंदी में बात करने के लिए सार चाहता था। Praise the Lord. Glory to God. Praise the Glory to God. Lord. May God grant your heart's desire, brother. May my Lord Jesus grant your heart's desire. You will get Hindi. అన్నా అన్నా Yes. Amen. जय मसीह। जय मसीह सर। हेलो। जय मसीह सर। అన్నా सबको जय అన్నా అన్నా मसीह। ఒక जितने लोग చిన్న అన్న जुड़े हुए हैं ఒక్కసారి నాకు ప్రే చేపియమన్నా నాకు నాకు ఒక్కసారి ప్రే చేపియమన్నా చెప్తానన్నా. And he is requesting to pray him personally हाँ to this meeting, in this meeting, and for Okay, yeah, for the Anta. family Wait a problems. minute. Wait. I got too many microphones. Jockey. Yes sir. Pastor brother Badeti is requesting to pray for him personally, so God will deliver him from all the problems, and God will comfort him, and God will show the way which he wants to go him, who wants to lead him through the Holy Spirit. Yes sir. Yes. Yes sir. Okay. ఎస్ సార్. అన్న అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రతిదినం కూడా మీ గురించి అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రభు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Hallelujah. Herod where? థ్యాంక్ యూ అన్న Herod where is థ్యాంక్ యూ అన్న next? అన్న हरिद्वार भैया आप बात कर दीजिए. हेलो। थैंक यू सर वेरी मच शेयरिंग फॉर योर गुड वर्ड and amazing word of God. God who choose he in the scripture right called many but choose one. There are many people, million people with Moses, but God called only Moses and teach him where and teach and tell him our rule and regulation how to serve God. So we think that if we follow God word, God lead all of us and blessing. Thank you so much. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Please remember, this is not me. This is the Holy Spirit. Hallelujah. और परमेश्वर ने हमसे बात किया था, और भाई ने ही बात किया. परमेश्वर हमसे जो बात बोलना है भाई के द्वारा हमसे बात किया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Hallelujah. Praise the Lord, Sona. sir. प्रेज द लॉर्ड सोनू भैया. Yes, sir. Praise the Lord, sir. I am in train, but thank you, sir. Thanks for your powerful message, and thanks be to the Lord that his teachers are already to this free tuition center for poor people, sir, and poor children, and the teaching work is going on. Please pray for that Lord fulfilled and needs, sir, teacher and children. Nah, please pray for our teacher. I have sister teacher, free given tuition to your children are tribal area. Please for all teachers and student and God full needs, sir. Thank you so much, sir. आमेन आमेन. जरूर प्रार्थना करेंगे सर. प्रभु जो आपने प्रभु के लिए महिमा के लिए कर रहा है, प्रभु और उनका काम के लिए द्वार खोल के आपको सारे जरूरत चीज को और देने के लिए प्रार्थना करेंगे. मैं एक बार आपके जगह में आऊंगा. थोड़ा आपका एड्रेस और जो थोड़ा पता थोड़ा मुझे मैसेज कर दीजिए. मैं जैसा कैसा आना है और नजदीक का रेलवे स्टेशन भी बता दीजिए. मैं आपके आके और सारे चीज देख के आऊंगा. ठीक है सर. ओके. Praise the Lord. Most welcome, sir. Most welcome, sir. In UP or RC, most welcome, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Praise the Lord.
ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న సో మచ్. అన్నా వందనాలు అన్న. వందనాలన్నా. అన్న అన్న మన అదే మన బ్రదర్ చెప్పినట్టుగా యెహోషువ జాషువాల గురించి చెప్పారు కదన్నా. అవునన్నా అవును. అన్న మాకు నాదో చిన్న కోరిక. అన్నయ్య అయ్యగారు చెప్తున్నటువంటి ఆ ప్రసంగాలు కొంచెం మాకేమైనా జిరాక్స్లు తీసి ఇస్తే వాట్సాప్ లో పెడితే మాకు అది ఆరాధనలో అవి చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి అన్న ప్రసంగాలు అవి. ఆయన అదే మనల్ని నోట్స్ రాసుకోమన్నారు కదా. అవునవునవును. అదే మనం నోట్స్ రాసుకోవడం. ఎందుకంటే ఆయన బైబిల్ ఏమి రాసుకోరు, నోట్స్ రాసుకుని మనకు చెప్పరు. మామూలుగా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు బట్టి పెడతారని చెప్తారన్న. అన్న మనమే నోట్స్ రాసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే ఇది వీడియోని మళ్ళా చూడొచ్చు, మీరు రికార్డ్ అవుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. మన చిన్న ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అన్న. నా బాబు, మా అబ్బాయి అన్న సామ్యుల్ బాబు బీఫార్మసీ థర్డ్ ఇయర్ అన్న. రేపు ఫస్ట్ వీక్ లోనే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లోనే ఎగ్జామ్ అన్న. కొంచెం బాబుగాడు భయపడుతున్నాడు ఎగ్జామ్. అది బీఫార్మసీ అనేది ప్రతి ఇయర్లీకి 2 ఎగ్జామ్లు ఉంటాయంట. అవి అయితే ఫస్ట్ సిమ్ జరుగుతుందంట. అది అక్కడేమో వాళ్ళకేమో సరైనటువంటి గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే లెక్చరర్స్ కానీ సరైనటువంటి వాళ్ళకి విధానంలో చెప్పక ఏమీ రాయాలో అర్థం కాక కొంచెం పెడుతున్నాడు అన్న. బాబు విషయంలో కొంచెం అన్న. ఏ పేరు అన్న బాబు పేరు? సామ్యుల్ బాబు. సామ్యుల్ బాబు అన్న అయ్యగారితో చెప్తాను. ఫస్ట్ Salman Raju is telling today's word is very touching my heart, and I want to share this word to my church, to my congregation, this message. So I prepare a notes on this, and I will share this word to my people and to encourage them, and this word will be more comfort to them. And thank you so much for sharing this wonderful message. And also he's requesting a prayer request about his son named Samuel Babu, and he is writing a B pharmacy examination second year. So please uphold Samuel Babu, because because of exams he had a great fear in his heart, and because of their poverty he's not spending more time to study. He's working half part time, and he's like that he's earning money and giving to the family. So he had not that much have knowledge. So please pray God will give him knowledge and strengthen him, and write the exams in a good way and get good marks. Yes sir. Yes. అన్న తప్పకుండా బాబు కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. బాబుని మరి దేవుడు మరి చక్కని తెలివి జ్ఞానం ఇచ్చే పరీక్షలు బి ఫార్మసీలో చక్కని మార్కులతో మరి దేవుడు పాస్ అయ్యే విధంగా మరి ప్రభు కార్యాలు జరిగిస్తారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. వందనాలన్న. అన్న మరి అయ్యగారు గత శుక్రవారం ప్రార్థించినట్లుగా మరి శనివారం సెకండ్ సాటర్డే సువార్త కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా మరి మమ్మలను దేవుడు ఎంతో వాడుకున్నాడు. అందుని బట్టి చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాను. అయితే ఈరోజు వాక్యము హిందీ అర్థం అవ్వకపోయినా మరి మీరు చెప్పిన అధ్యాయాన్ని నేను రాసుకొని దాన్ని నేను పూర్తిగా చదువుతా ఉన్నాను, అర్థం చేసుకున్నాను చాలా చక్కగా. రెండవది ఏంటంటే వచ్చే నెల డిసెంబరు క్రిస్మస్ ఆరాధనలు ఉన్నాయి కనుక సూచన సెంటర్ పిల్లలందరూ కూడా మరి డాన్స్ కి పాటలు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటా ఉన్నారు, కంఠస్థ వాక్యాలు నేర్చుకుంటా ఉన్నారు క్రిస్మస్ లో చెప్పడానికి. వారి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పండి అయ్య గారికి. చిన్న పిల్లలకి స్టడీ సెంటర్ అలాగే కూడా పనులు ప్రారంభం అవుతా ఉన్నాయి, కడతా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం అన్న. మరి శనివారం సువార్త ప్రార్థన అయ్యగారిది చాలా మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. దానికోసం చాలా దీవెనకరంగా దేవుడు జరిగించాడు. అందులో దేవునికే మహిమ అన్న. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. Hallelujah. Pastor Manohar is telling and through last week you prayed for the gospel outreach program in our area. By the grace of God and through your prayers, and God did great miracles, and God used us in a mighty way. Many people have the opportunity to hear the word of God and came to Christ and know about Christ, and
witchcraft people also hear the word of God. They also came forward to hear the word of God, and they also changed their heart and experienced God's love, and uh, they accept Jesus Christ. Praise God, hallelujah. Many miracles God did in this Amen. Praise the Lord. gospel outreach program. Thank you so much for for your prayers, and in the coming month we have a Christmas in our area. We will celebrate more 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 joyfully, and in this time our children, Hallelujah. those who are coming to the tuition centers, they are learning the songs and Bible verses, memory verses, and they are ready to perform in the Christmas time, and this is a great blessing for them, and thank you so much for making a way to provide these tuition centers to the children. Through this, children have the opportunity to learn the songs and Bible verses. That's a great encouragement to learn in the Christmas time, especially. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, sir. Uh, ప్రైజ్ లార్డ్ చార్లీ అన్న, ప్రైజ్ లార్డ్ Anna, praise the Lord, Anna. అన్నా. మరి పోయిన వారంలో నాతో పాటు ఒక 4-5 కూర్చున్నారు పాస్టర్ గారు బ్యాక్ సైడ్ లో. సో అయితే అయ్యగారు చెప్పిన వాక్యం వింటూ వింటూ చాలా సంతోషపడ్డారు. అంటే మన వాళ్ళతోటి కూడా ఇటువంటి అమెరికాకి వెళ్ళి పాస్టర్ ఏ విధంగా అయితే చక్కగా నవ్వుతూ వాక్యాన్ని బోధిస్తా ఉన్నారు, చాలా సంతోషం అని వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. అయితే ఈ రోజు మనతో పాటు వచ్చారు కానీ మొత్తం వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చారు, ఎంతో కూర్చున్నారు వాళ్ళు, మంచి మంచి సంఘస్థులు వాళ్ళు. అయ్యా దేవుని మాతృత్వం ఏంటంటే అన్న, లాస్ట్ టైం మీరు చేసిన ప్రార్థన బట్టి దేవుడు చాలా గొప్ప ప్రార్థన చేశారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న స్థలం సంఘానికి మేము నెలకు 50,000 రెంట్ కడతాం కదా. అయితే ఈ మధ్యన ఈ ఓనర్ ఈ స్థలాన్ని అమ్మేస్తున్నారు, ఈ సంఘం ఉన్న స్థలాన్ని అమ్మేస్తున్నారు కనుక వేరే స్థలాన్ని మేము మళ్ళీ వెతికి అక్కడ సంఘాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. అయితే కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేశాను, మాకు వేరే స్థలం దొరికేదాకా కొంచెం మీరు ఓపిక పట్టండి అని. నేను గిటార్ కొంచెం అన్నాను, సౌండ్ తగ్గించండి. అందుకొచ్చి మీరు కొంచెం మీరు అందరు కలిసి ప్రార్థన చేయండి. చార్లీ అన్న, నువ్వు కూడా ప్రార్థన చెయ్యి. తప్పక మాకు అనుకూల రీతిగా స్థలం దొరికేట్టుగా మీరు ప్రార్థన చేయండి. మాకు ఇక్కడ బాంబేలో కూడా అనాథ పిల్లల ఆశ్రమ్స్ ఉన్నాయి, మాకు కూడా ఫౌండేషన్స్ గిట్లా వీటి వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే క్రిస్మస్ అప్పుడు మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ బాంబేలో పెడతా ఉంటాం, అనాథ పిల్లల మధ్యన, విధవరాల మధ్యన, లేడీస్ మధ్యన ఇలా చేస్తా ఉంటాం. సో ఇంతవరకు అయితే దేవుని మహాకృప చేత అన్ని అనుకూలంగానే జరిగాయి. ఈసారి దేవుని మహాకృప చేత మీరు అందరు మళ్ళీ మీరు కలిచారు, మీ అందరి ప్రార్థన మాకుంది, మీ అందరి ప్రార్థన సపోర్ట్ మాకుంది. దేవుడు తప్పక ఈసారి కూడా అద్భుతమైన రీతిగా మరి క్రిస్మస్ పండుగలు కానీ మిగిలిన పండుగలు కానీ జరగడానికి దేవుడు సాయం చేస్తాడు అన్న ఒక నమ్మకము. విషయంగా ఏంటంటే ఈ సంఘం పట్ల మీరు కొంచెం ఆసక్తితో ప్రార్థించేయండి. అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి, బాంబేలో ఉన్న మోస్ట్ సంఘాలన్నీ కూడా రెంటెడే మనకు. సో ఇంతవరకు అయితే ఏ లోటు లేదు, అయినా కానీ కూడా ఇక ముందు కూడా దేవుడు సాయం చేసేట్టుగా మీరు ప్రార్థించేయండి. అసలు కూడా ప్రార్థన చేయండి. మనూరు కూడా ధన్యవాదాలు. మనూరు తమ్ముడు మంచి చక్కని చార్లీ అన్నతోటి పరిచయం చేపించాడు, చాలా సంతోషము. తెలుగులో నాకు కావాల్సిన నుంచి అన్న అందుకోసమే చాలా సంతోషము. అయ్యగారికి కూడా చాలా సంతోషము. స్టీవెన్ అయ్య గారికి కూడా చాలా సంతోషం. ఎంతో ఆసక్తితో ప్రేమ కలిగి మరి సమయాన్ని తీసి మనందరికీ చక్కని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ బలపరుస్తా ఉన్నాడు, అనేకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. మేము కూడా అయ్యగారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాము, చక్కగా ఇంకా ఆరోగ్యం కలిగి ఇంకా లోతైన మాటలు మాకు నేర్పుతూ మాకు సహకారం ఉంటూ ముందు సాగటానికి దేవుడు ఇంకా దీవించలాగా నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అయ్యా. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి అయ్యగారు. Pastor Moses is telling last week some of the pastors sit beside me and hear your message, and they are very much excited to hear your word, and they after the completing the message, and they said this is amazing that one brother from America came through online and sharing the word of God, and milling and that mixing with the people and interacting with the people and more and more, and encouraging them and comforting them,
and as a fellow man, he become a fellow man and sharing the word of God. This we never see before, and this is a wonderful thing we see before, and really we blessed and touched through this message, and that's really, that brother is wonderful, and like that they said. And today also they came today and hear the word of God, and they sit behind me, and they're praising God for the God opening the doors and through this online to hear the word of God in this place. And also he's requesting a prayer request, and this his church is in a rent house, and now he's paying $500 every month, but there is a very high cost in Mumbai, because Mumbai is a big city, so that is very high cost. But that owner is telling to them to vacate that home, so because he want to sell that house. So so please pray God will show them a good place to worship in a good price. And so please remember to this for this need, and because in this Christmas time he want to do God's ministry in a wonderful way and to be a blessed way. And he is running a orphanage home, a widow home, and distressed woman home, and also he's doing many ministries among the poor and among the downtrodden people. So please uphold this brother and his ministry to be a blessing to many people in the coming days, because through our prayers we unite in each other, and work for the Lord, and we through prayers and through our joining hands. And I want to go to his place and meet him, and work with him for 2 days in the coming week. So I'm going to the Mumbai, so please pray, and God will open doors for this ministry and brother, for especially for the room he want to worship Yes. in this week. So please uphold, God will provide a good room for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And as you go to Mumbai, you have a backup for Zoom meetings. Yes, sir. Yes, yes, sir. Sure, sir. Uh, sure, sir. I go to Mumbai and conduct a Zoom meeting from there also. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Praise the Lord. మరి చక్కని మాటలు अभी तक हम लोग बहुत अच्छा वचन सुना है, हम लोग बहुत తెలుగు आशीष हो गया. Praise the Lord. Sir, Amos, Judge. hold 1 second. Wait 1 Okay. second. Harrogware posted that in the month of November, they're going to have 300 baptisms. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. If you want to invite me, I will go his place and share the word of God and encourage them. Well, I'm just telling everybody, praise the Lord. 300 people got Most saved. welcome, Pastor Stephen. Amen. We are सब very लोग happy. प्रभु को महिमा We are करेंगे, happy to receive क्योंकि your. परमेश्वर के और कार्य से और हरिद्वार का भाई के और जो जगह में 300 लोग बपतिस्मा लेने के लिए आगे आ गया है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को महिमा Hallelujah. Praise the करेंगे. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is working in persecution. और हिंसा और वो जो विरोध हो रहा है, वो विरोध में भी और परमेश्वर उनको कार्य कर रहा है, वही हम लोग प्रभु को महिमा करेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you, Praise Lord. the Lord. Hallelujah. Amos, you have the floor. Yeah. Sir, thank you once again to see you. And I praise to God, and especially I thanks to Josh and brother Manohar, all the Zoom attended. Thank you so much your presence. And in today God's word, the Holy Spirit spoke to me. Uh, we must preach the gospel. No one can stop, and no need to permit. That's touch my heart. Wherever I will go, so we'll preach the gospel. We introduce the Jesus. Yesterday,
small testimony. Few small testimony. Yesterday, I went to worship center Sunday. So the time while I was coming the bike, one Roger Butte. one engineering student is asking a lift, then I will stop immediately. I carry him by bike. So that time I ask, do you believe Jesus? Believe Jesus. He said, my mommy go to church. I don't know. He said like that. So immediately I said, you believe Jesus, he will bless you. He died for you. I said like that. Can I give Bible something? And yes, sir, give Bible. I will give 2 Bibles for him. And he's promised to, I will read, I will believe Jesus like that. So we cannot stop. So we preach, Cannot we stop. call Jesus. Yes, that's a touch my heart. Wherever we will Praise God. go, Praise God. we will live for the Amen. Christ. Amen. We are Amen. encouraging every day. We are encouraging by the word. Thank you so much for that Yes. word. And we wonderful. Amen. Hallelujah. Praise Lord. Today's word is a great blessing for me, Hallelujah, and hallelujah, hallelujah, I hallelujah. really touched by God's word. And thank you so much for sharing this wonderful message. Recently, I had I want to hear more about the Ark of the Covenant, and today God fulfill my heart through the Ark of the Covenant message and explaining the Ark of the Covenant, especially the chapters where God spoke to Moses in 26, 27, and 28 chapters in Exodus. That's really, I will read it again and again, and I want to learn more what God spoke to Moses. That's a really blessing to me, sir. Thank you so much. Amen. And Amen. Amen. I recently, I understand the Ark of the Covenant is nothing but the name of Jesus in these times. In present days, in the name of Jesus is mentioned in the olden times. Ark of the Covenant, because there is a power in the name of Jesus. At the time of olden days, there is a power in the Ark of the Covenant, same as like in the present days, the Ark of the name of Jesus have the same more power, because the God give the name, His name, use His name. So when we use His name, mighty miracles will be happen, many deliverance will be happen, many great things will be happen in our lives and in our ministry, in our country. Praise the Lord. Thank you so much for sharing this wonderful Amen. message. Recently, Praise God. Praise God. really, this is a great blessing for me. I study more and more these three chapters, four chapters. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful message. This is a great blessing for me. Thank you, sir. Praise God. Praise God. Sir, day by day, the pastors are coming, increasing more. In coming days, Amen. more pastors are come and they are encouraged. They are blessed by the Lord, blessed by the word. Amen. It's Amen. wonderful. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Praise God. It's a Praise God's God. plan. It's a God's plan to do more Yes. work. Yeah, to do more work to bring many souls for His kingdom. Amen. Yeah. Amen. 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 Challenger, lead us in song. Amazing Grace. Dear brother, Stephen brother, I tell you one thing I want to say, 1 minute. That is really, we are very fortunate and we feel it's a privilege to meet you personally and Zoom meetings and hear your message from the Bible. We feel we are really blessed and touched by the Holy Spirit God. And as brother Jesse is telling that, we really enjoy your teaching, brother. I Amen. praise God Thank for you. this. Thank you. I praise God for this. We really blessed. Amen. And also All God's plan. I also enjoy the company of Manohar, Jachin brother, and Shailendra. They happen to be my friends. I Yes. bless God. I praise His name. Okay. Yes, sir. And Good. Amen. and also we Amen. are eagerly waiting for you to receive you to see you in person. In person, physically, Yes. we want to meet you. And in the month of July, we conducted a pastors meeting where there are 50 pastors came, and also we called a collector of the district, IAS like IAS. He Yeah. resigned the job and is doing the ministry here. And we conducted the meetings where one Gentile and a Hindu, we call him, he came and got baptized. Now Amen. he stood there in his own village as a lamppost. And every month 19th, we are conducting gospel meeting in his place. That is a Amen. miracle God did in my ministry over 10 years there at Vatluru, Yeluru, near Vijayawada. I thank and praise God
for the fellowship and for the friendship I have with all your brothers. I thank you and I Amen. remain. I remain. I praise God. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you so Thank much. you, sir. Praise the Lord. Amen. Shalom, brother. Amen. Stu brother, shalom. Shalom, Anna. Praise the Lord. Praise the Lord, Anna. Actually, I didn't have that Amazing Grace song. Next week, I will get it and I will sing for you. Today, I will sing for Lord, I lift your name on high. Yes, Yes. that's good. Yes. Amen. 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 Everybody sing. Yes. Lord, I Lift your name on Lord, I lift your name on Name on high. high. Lord, I I love to love to sing your sing your praise. praises. I'm so glad in all In my all your life. life. I'm so glad you came to That's a thing to save save us. us. Lord, I lift your You name lift your on name on high. high. Lord, I love But to I live sing to your sing your praise. praises. I'm so glad So you are glad you came mine. around. I'm so glad you came You came save down us. around. You came from Came from heaven to heaven earth to earth. to You show the showed way way from the earth to to the earth to the cross. cross. My best you Death pay to pay. from the cross to the grave, from the grave to the Way to the sky. sky. Lord, lift your Lord, I name lift on your high. name on high. You came from the earth Yes, to to show the show way from the earth to the cross. us My my praise. thanks to pay from the cross to the From the grave, cross from the to the grave to the grave to sky. Lord, I I lift your lift your name on name on high. high. Lord, I lift your name on high. దేవా నిన్నే స్తుతించు Yes, Lord. దేవా నిన్నే కీర్తించు నా జీవితమంతా నీవే నన్ను రక్షించినది నీవే పరలోకము నుంచి దిగి వచ్చెను నా పాపముపై మరణించెను పరలోకము నుండి దిగి వచ్చెను నా పాపముపై మరణించెను మృత్యుంజయుడా యేసు కరుణగెగెను దేవా నిన్నే స్తుతించు. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are my life. I'm so glad you are in favor. You came from heaven to earth. You showed the way. Yes, to the cross. Mighty best to bear from the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your Lift name your name on on high.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Hallelujah, Amen. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise God. Jesus. Praise Amen. God. Praise Lord, we God. lift up Thank you. your name, Lord. Thank Lord, Praise we you. God. lift up Thank your you. name high. Hallelujah. Lord, Hallelujah. you came from Thank the you, Lord. heaven to earth and deliver us, Lord. They give Yes, us Lord. Yes, salvation Lord. and fill us with your mighty Holy Spirit, Lord, and use us, Lord. Thank you, Lord. Yes, Thank you. man. We lift your Amen, holy name, amen, Lord, amen. high and high and high. Thank you, Jesus. Baruch Hallelujah. Hashem, Baruch Hashem, Baruch Amen. Hashem. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you so much, Sailendra Very sir, happy. for a wonderful Very, singing. I'm very happy Yes. to participating this Google Meet. Yes, sir. I'm very glad. I'm very expressly. I'm telling that Yes. this is the first inspiration to me to join in the Google Meet. Yes. So I love this meet and I love you people. I love Mr. Sir Steven brother. I'm very anxiously waiting for you and the meeting in India. We will travel it together and all the areas, all the places with Yeah. praising God, praising Jesus. We Praise want to serve the Jesus to all the nation. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, Hallelujah. Amen. sir. Amen. Hallelujah. 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 Thank you. Praise Thank the you. Lord. Thank you. Praise the Lord. चक्कने मारे अभी तक हमने बहुत अच्छा वचन सुना है, भाई के द्वारा बहुत अच्छा गीत सुना है। प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे। सब लोग ताली बजा के Amen. यीशु मसीह का नाम Amen. में Amen. Hallelujah. प्रभु Amen. को Amen. महिमा Amen. करेंगे। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. हालेलुया, Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you so much, sir, for taking your valuable time and spending more time with us. And 2 hours you already joining with us. That's a great blessing. Thank you, sir, for your kind and generous heart for us, and a great burden for the people in India, perishing souls in India. And please, Charles, please pray and close this meeting, sir. Charles brother, I'm very, very Amen. thankful to you. And Manohar also, I'm very, very thankful to him because he met with Praise the Lord. good people you are, brother Steven brother and Charles brother. And I'm very, very glad. And also, thank you, Joseph and Moses also. We are the friends I praise in God for everyone. Praise the I Lord. praise so God many for years. everyone. So many years. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Amen. అయ్యగారిని ప్రార్థన చేయించండి బాగా Thanks. అయిపోయింది నా స్పీచ్ అయ్యలేదు ఇక Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అయ్యగారు. Thank you. హ్యాపీగా ఉన్నాడా? హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేసి క్లోజ్ చేయించండి జార్జిన్ బ్రదర్. చాలా టైం. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We want to follow your footstep, Lord. Hallelujah. Lead us, Lord. Lead us with your mighty Holy Spirit. Fill us, Lord. Fill us with your mighty Holy Spirit, Lord. As you send your Holy Spirit on the Pentecostal day, and send us same as like in our midst, Lord, and fill us, Lord, with your fire, and allow us we are allowing our hearts to burn in your fire, Lord. Hallelujah. Hallelujah. As you came as a consuming fire on the mountain top, and as you today also you are among us to and fill us with your consuming fire and consuming us, and our hearts and our souls, Lord. Thank you, Lord. Thank you for purifying us. Thank you for filling us with your mighty fire, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Fill us, Lord, fill us with your mighty fire, consuming fire, and burn us, Lord. Burn our hearts for your glory, and for use us as Peter used by you at the time. Before that, he fallen from you, and he's not that much courageously. He's not work, Lord. He's very much. He's very much fearfully fear person, Lord. And after his anointing burning his heart with fire, he stands strong, and only he look after you. He went on going on doing miracles, Lord. Same as like put us on fire, Lord. Put us our hearts on fire, Lord, and use us for, like as Peter, and for the glory of your name, Lord. Not for our glory, your glory only, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you so much, sir.
this wonderful today. I really enjoy this meeting, and you tell the word. Our hearts must be burned like burned with the consuming fire. That's really touched my heart, and I have to put my submit my everything to God's hand, and He will mold me, He will melt me, and He will use me for His glory. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you so Hallelujah. much, sir. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, sir. We Please, praise God for everyone. We praise God. Thank you, Jesus. thank you, sir. Thank you. Please pray and close this meeting, sir. Yes. My God. Hallelujah. Father, you love us so much. और परमेश्वर प्रभु जी पिता आप हमसे बहुत प्यार कर रहा प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। You have brought my brothers and sisters in my life together to worship you. प्रभु जी और ये भाई और बहन लोगों को मेरा जिंदगी में आपने परिचय किया, और मेरा आत्मिक उन्नति के लिए आपने उन लोगों का बीच में हम लोग मिलके आपका आराधना करने के लिए, वो वचन सुनने के लिए मौका दिया। प्रभु जी आपको धन्यवाद। You are guiding us through the Holy Spirit to love you more. प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आपने चला रहा प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। As we trust you more, you are filling our hearts with wisdom and knowledge. प्रभु जी हम आपका और रास्ता में जाते समय और आपने और अपने ज्ञान से और आपको भक्ति से प्रभु जी, और जैसा पवित्र आत्मा के और उनका मार्ग में, आपका मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा को हम लोग और उनको बात सुनने के लिए हमको कान दे दीजिए प्रभु जी। Thank you that we can look back and see your hand working in our lives and the people of India and Pakistan. प्रभु जी हम लोग आपने पीछे देखेगा तो, और आपने जितना बड़ा बड़ा कार्य आपने कर दिया, और भारत में और पाकिस्तान में और सारे धरती में आपने वचन के द्वारा और जितना जितना महान कार्य कर दिया, हम सोचेगा तो और हमारा हृदय आनंद से भर रहा है प्रभु जी। We are seeing so many be saved because you have called them to salvation. प्रभु जी और बहुत लोग उद्धार पाने के लिए और आपका प्यार को समझ के और आपके रास्ते में चलने के लिए, और बहुत लोग आगे आ रहे हो प्रभु जी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And you have allowed us to be a part of it as your children. प्रभु जी और हमको इस्तेमाल करके आपका और सेवा करने के लिए, आपका बेटा और बेटी का और जिंदगी में हम भी उनके साथ मिलके काम करने के लिए मौका दिया, और उनका जिंदगी में आशीष का कारण बना दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Help us to learn through these scriptures today how important the Old Testament is to our faith today. प्रभु जी आज का वचन के द्वारा हमसे और बहुत अच्छा तरीका से आपने बात किया प्रभु जी। ऐसा पुराना नियम में जैसा आपका वचन ऐसा लिखा है, और अभी भी वो हमारा जिंदगी में जैसा आशीष का कारण, जैसा जीवित वचन हमारा जिंदगी में जीवित होता है, जीवित देता है, वो आपने अच्छा से हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। As you had Moses and the people make the breastplate and the ephod and the clothes, और प्रभु जी ऐसा ही, और आपने जो और वस्त्र धारण में और जैसा रखना है, एफोद रखना है, और उसका 12 और इसमें पत्थर रखना है, उसका बीच में एफोद और ब्रेस्टप्लेट रखना है, उसके ऊपर उरीम और तुमीम भी रखना है बोल के आपने हमसे बात किया प्रभु जी। as the ephod and the breastplate sealed Aaron's heart, so the Holy Spirit seals our heart. जैसा है और अभी पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जैसा और सील करता है, वैसा है आरोन का हृदय को भी, और ये पूरा ये वस्त्र धारण उनको सील करने के लिए, और जो आपने और उनका दृश्य के रूप में हमको पहले बता दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। I pray for our prayer request today for Joseph and the 2 bathrooms and the poor illiterate farmers need Jesus. और प्रभु जी अभी अब भाई जोसेफ के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनका
और जो अवसर है प्रभु जी बाथरूम के बारे में, और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और उनका जो जगह में और बहुत गरीब लोग हैं, आपको बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग भी आपके उद्धार पाने के लिए आपने मार्ग खोल रहे प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। For Pastor Devin to be completely healed from the dog bite. प्रभु जी, और रास्ते में कुत्ता का काटने के द्वारा भाई देवानंद का शरीर में बहुत तकलीफ हो गया प्रभु जी, और देवानंद के लिए खास करके प्रार्थना कर रहा हूँ उसको, और सिर से लेकर और पांव तक उनको छू लीजिए, उनका संपूर्ण रीति से और चंगा कर दीजिए। For Amani, pray for him and the persecution that his church and he are going through. और प्रभु जी, और भाई के लिए और इमानी के लिए भाई प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, ऐसा है उनका कलीसिया और वो समस्या से गुजर रहे प्रभु जी, वो बहुत लोग विरोध में उनको खड़ा होके उनको रुकाने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, अपने उनको ताकत दे दीजिए, आपके मार्ग में चला दीजिए। We thank you for Beleed and for him being touched by you through a phone call by Jockin during his deepest depression. प्रभु जी, और आपने पवित्र आत्मा के द्वारा और जाकिन भाई के द्वारा ब्लेड के बात करने के लिए आपने मौका दिया प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनको और उनका हृदय को आपने शांति कर दिया, उनको आनंद दे दिया, उनको तसल्ली दे दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We pray for deliverance for him and for faith. प्रभु जी, उनको सारे समस्याओं से उनको दूर कर दीजिए, उनको और उनका विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी, आपका मार्ग में आगे विश्वास से दृढ़ से आपके मार्ग में आगे जाने के लिए, और आपने ताकत दे दीजिए प्रभु जी। For Patha Bakula, for his son, for the pharmacy exams and wisdom. और पात गोकुल सोलमन राज के बारे में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और उनका बेटा और शामिल बाबू बी फार्मेसी के एग्जाम के लिए और प्रिपेयर हो रहे प्रभु जी, उनको और आपने ज्ञान दे दीजिए, बुद्धि दे दीजिए, और अच्छा सा और उनको मार्क में और एग्जाम में मार्क आने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। For Sona and the 6 teachers that came forward. और भाई सोने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, और 6 और टीचर लोग आगे आके और ऐसा है और बच्चों को और शिक्षा और पढ़ाई में और वो लोग मदद कर रहे प्रभु जी, उनको आशीष कर दीजिए। For Manahor and the Saturday outreaches that people are being saved, witches are being saved out of witchcraft. प्रभु जी, और मनोहर भाई ने और शनिवार का दिन में और जो और प्रचार के लिए और आपके और गांव में जाके प्रचार करेगा तो बहुत लोग उद्धार पा लिया प्रभु जी, और जो शैतान का और आराधना करता है वो भी सुसमाचार सुन के आपका प्यार को समझ के आपके सामने आने के लिए आपने आश्चर्यकार किया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We thank you, Lord, for the 300 baptisms in Hardyware's area. प्रभु जी, हरिद्वार का और जो उत्तर प्रदेश में आपने बहुत लोग आपको नाम को जानने के लिए और 300 लोग आगे आके बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। For Moses, we pray for the rent house he's in Mumbai and for a new place to worship. प्रभु जी, भाई मोजेस के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अभी वो ये पुराना रेंट हाउस को छोड़ के नया रेंट हाउस के लिए जाने के लिए आपने अच्छा जगह दिखा दीजिए प्रभु जी, आपने जो जगह में आपने चाहता है वही जगह में भाई को लेके जाना। Lord, we want to thank you for all that you're doing in our lives. प्रभु जी, आपने हमारे जिंदगी में जो कार्य कर रहा है सारे अद्भुत आश्चर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Lord, I want to lift up everyone's name that's here today. प्रभु जी, और ये मीटिंग में और शामिल हो गया सारे लोगों को नाम पुकार के मैं आपका उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord, I can only see certain names for Brother Jockin, Manamora, Raja Baba. प्रभु जी, और जाकिन और मनोरमा और राज बाबू, जोसेफ भैया, मोजेस भैया, शैलेंद्र भैया, आमोस भैया और एमनी बाबू, मनोहर अन्ना
लालू भैया, देवानंद भैया, सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। Yes, and all of the rest on the second page. I'm going to read them again. Pastor Jock and Amos, Bethel Bride, Moses, Ammonite. प्रभु जी दूसरा पेज में भी हम लोग भाई लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और बेतेल का और कलीसिया में आपके और वचन सुन रहा है प्रभु जी, सारे विश्वास लोगों को आप दृढ़ कर दीजिए। और आमोस भैया के लिए और भाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, सारे जिंदगी में आप आशीष कर दीजिए। I go Gandahar, Grace, Kumar, Jerusa, Rainey, Joseph. और गंगाधर और ग्रेस और रेनी और जेरूशा और जोसेफ भाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। Kumar, Kupa, Lalo, Manahor. कृपा दीदी के बारे में और लालू भाई के बारे में, मनोहर भाई के बारे में भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। Raja Baba, Rama, Ramesh Baba, Ranga Raja. రాజు బాబు గారు, రమేష్ బాబు గారు, అలాగే లింగరాజు గారు, వీరందరి నిమిత్తం हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। Shalinder, Suneth. शैलेंद्र भाई के लिए और सोनू भाई के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। Lord, I know I slaughtered their names, but you know every one of them. प्रभु जी, और हम और नाम को और हम अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, फिर भी हम सब लोगों को नाम आप जानते हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Put your arms around each one, myself, love us. प्रभु जी आपका हाथों का और हम सब लोगों का ऊपर आपका हाथों के अंदर हमको रख दीजिए, हमको और अपने अच्छे से भाई को और सारे भाई बहन को आप संभाल लीजिए प्रभु जी। Thank you, Lord, for each one. प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord, for bringing us together. प्रभु जी हम सब लोगों को एक जगह में लेके आके आपने इच्छा के अनुसार आपने चला रहा प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Yes, Lord. I pray for the families and for the congregations, Lord, that you will just embrace each one with your love. प्रभु जी भाई लोगों का और जो और उनका फैमिली है, उनका कलीसिया है और उनका विश्वासी लोग है, सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, सारे लोगों को आपने आशीष कर दीजिए, आपने प्रोटेक्ट कर दीजिए। In the precious name of Jesus, Amen. यीशु मसीह का अद्भुत नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you Lord. Bye. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Thank you Jesus. I will see you Friday sir. and Thank you, then sir. Tuesday. See you on Bye, Friday. sir. See you Friday, sir. See you Yes, Friday. sir. We are waiting for Friday. We are waiting for. Yes. Okay. Amen. Amen. We meet Bye-bye. again on Amen. Friday. We meet on Friday. Yes. Amen. Amen. Thank you. Bye. Thank Bye. you.